Morning, students. How are you all? Hope you all are safe. Today, I'm going to explain you poem Imagination from your Unit 1, Section C. Imagination has been written by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, basically he is an Irish playwright. But this is the poem written by him. He even was awarded by Nobel Prize in Literature in 1995. He had written many good dramas. Out of those is One and Superman, Pygmalion. Pygmalion, Pygmalion, that My Fair Lady movie that is based on Pygmalion. But our basic objective is to read this poem and to know whatever the message the poet wants to give here. Basically it is for learning only, that you can just read, as it is a rhythm corner, means you have to just read and enjoy the poem. So let's start with the poem Imagination. So what is the meaning of imagination? Imagination beta means kalpana, means the thing which is not physically existing, but it is in our mind. We think about it. That is what imagination. Imagination, beta, in this poem, the poet tells us that how he lived in the world of fantasy and imagination when he was a young boy. हम भी तो ऐसे ही करते थे जब हम छोटे थे. आप तो अभी भी करते होगे ना, आप तो बहुत छोटे बच्चे हो. आप अपनी कल्पना की, फैंटेसी की लाइफ में जीते होगे. आप सोचते होगे कि कई बार जब सुपरमैन को देखते हो, दैट आई वॉन्ट टू बिकम ए सुपरमैन, और आई वॉन्ट टू जंप लाइक दिस एंड आई कैन डू दिस एंड दैट, है ना. स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इवन व्हेन यू see the movie of any action hero, you start imagining about that कि मैं भी एक action hero बन जाऊँ. और many things are there in our mind whenever it depends on the situation. कि suppose if we are reading something, then we start thinking about that hero. If we are watching the movie and the serial, so हमारे जो विचार होते हैं उस टाइम पर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं जैसे हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिस तरह की सराउंडिंग्स में हम रह रहे होते हैं. बट हेयर इन दिस पोएम इमेजिनेशन वी विल रीड दैट हाउ दैट G.B. Bernard Shaw as a young boy live in the world of fantasy and imagination. So let's read the poem. I used to play at pirates and sail the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. I had a vivid imagination. Adventure was on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. So first of all, I would like to tell you the meaning of a few words. Like there is a word pirate. Pirate you must have read or must have watched in the cartoon movies कि pirates क्या होते हैं, sea robbers होते हैं, जो शिप्स होती हैं उनको, उन पे से सामान को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, उनको लूटते हैं. देन देयर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ व्हाट, काउबॉय. काउबॉय क्या होता है बेटा? वन हु लुक्स आफ्टर द कैटल, जो कि पशुओं की देखभाल करता है. देन देयर इज़ सेवन सीज. बेटा सेवन सीज जो टर्म है, इट हैज़ बीन यूज फॉर द सीज ऑफ द वर्ल्ड, कि जितने भी संसार में समुद्र हैं उनके लिए यूज़ की गई है. दो सेवन सीज, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, इनको बोल देते हैं. बट जो रोमन पीपल थे वो रेड सी, कैप्शियन सीज, ऐसे सेवन जो सीज थे उनको सेवन सीज में काउंट करते थे. बट हेयर द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दिस दैट कि वो जो पोएट है ही वो जस्ट lost in his imagination that he would do the sea voyage. Sea voyage समुद्री यात्राएं किया करता था, and he would explore the sea, और समुद्र को वो explore किया करने के बारे में सोचता रहता था. He kept on thinking about all those things like exploring seas and the world. Okay, so I used to play at pirates. Now what does the poet want to say? That as a boy the poet used to play the game of pirates and act as if he were sailing in a ship on the seven seas. When he used to play the games, he assumed that he was a pirate and he acted as that he was sailing
ऐसे मैंने आपको बताया ना दैट वी यूज वॉज अलोंग विथ ही, बट व्हेन वी आर जस्ट इमेजिनिंग मीन्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट द रियल थिंग, दैट टाइम वी यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। ठीक है, तो ही इफ ही वर सेलिंग इन अ शिप ऑन द सेवन सीज आई टोल्ड यू हेयर it is used for the all the seas of the world. Okay, and this term usually associated with the sailors and the pirates, and he himself is assuming here the pirate. Okay, now second thing, I told you that here the poet is learning, he is reminding his old days, he is lost in his imagination that he would play different games like acting pirate, cowboy. ठीक है, तो in the very first stanza we read about too that first he was thinking about a pirate that he assumed when he was young. जब वो छोटा था तो वो एक पायरेट की तरह मतलब गेम पायरेट एज्यूम करता था अपने आप को, और सेवन सीज यानी कि जितने भी समुद्र हैं उन पे उनकी यात्राएं किया करता था। मीन्स ही सेट हिज वॉइस सी वॉइस व्हेन ही वाज यंग। Then I was a cowboy. Then another he started thinking about assuming that he was a cowboy. Cowboy बेटा I told you that cowboy one who look after the cattle, जो कि पशुओं की देखभाल करता है। कि वो काश, जैसे आप कहते हो ना काश कि मैं एक पायलट होता, काश कि मैं एक ये होता, ऐसे ही जो बच्चा है वो एज्यूम कर रहा कि मैं एक पायलट होता और मैं सारे समुद्रों की यात्रा कर रहा होता, और मैं एक काउबॉय होता, मैं सारे पशुओं की देखभाल कर रहा होता। दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज, और यही सिंपल जो चीज़ें थी वो उसको प्लीज़ करना, वो उसको खुश कर देती थी। नाउ सी द यूसेज ऑफ डिड बेटा। When I told you tenses, I told you that in past, in negative or interrogative sentence we use did, but in affirmative sentence we do not use did. But this is the exceptional case बच्चा, कि अगर आप अपने एक्शन को एम्फसाइज करना चाहते हो, लाइक मम्मा कहती है पापा के आते ही कि इसने तो आज कोई भी काम नहीं किया है, तो आप कहते हो मम्मा मैं पढ़ता तो हूँ, तो इन दैट केस यू विल यूज़ आई डू स्टडी मम्मा। ओके, तो ये जब आप अपने एक्शंस को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं इन दैट केस, तो इन प्रेजेंट टेंस यू विल यूज डू और डस अकॉर्डिंगली, और इन पास्ट टेंस यू विल यूज डिड। सो हेयर दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज़, कि ये जितनी भी सिंपल थिंग्स थी वो मुझे खुश करती थी। तो व्हेन यू वुड राइट द आंसर यू कैन राइट दैट दोज सिंपल थिंग्स प्लीज़ द ऑथर, कि वो जो ऑथर है उसको ये सिंपल चीज़ें जो हैं बहुत खुश कर देती थी। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज I had a vivid imagination. Now what is the meaning given here of vivid? Vivid means here clear, कि मेरे दिमाग में ना बिल्कुल clear picture है, clear imagination है। Adventure was on my mind. Now what is the meaning of adventure? Adventure means बेटा a task involving risk, कि वो टास्क जिसमें कि रिस्क होता है, एक एक्साइटिंग रिस्क एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। और एडवेंचरर बेटा वो पर्सन होता है हु एन्जॉयज़ एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग रिस्क, कि जो नए एक्सपीरियंसेस जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व होता है उनको करता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एडवेंचरर। सो एडवेंचर वॉज ऑन माई माइंड, इट मीन्स द पोएट वॉज एन एडवेंचरर। उसके दिमाग में ऑलवेज वो काम होते हैं जिनमें रिस्क होता है। आई डिस्कवर द जॉयज़ ऑफ रीडिंग, कि मैंने डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवर कर लिया है क्या? जॉयज़ ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग में मैंने खुशी हासिल करना ढूंढ लिया है, कि वो बुक्स रीड करता है और बुक्स रीड करके वो आनंदित होता है। ही गेन द जॉय हैप्पीनेस by reading the books and escape the daily grind. Now one of another uses of reading books, he had told that first of all that we get happiness, joy by reading books, and another is what, that we can save ourselves from the daily जो टीडियस, मोनोटोनस, बोरिंग जो रूटीन वर्क होता है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बेटा मोनोटोनस होता है टीडियस, नीरस सा काम, यानी कि जो काम हम डेली करते हैं तो उससे उसकी चार्म ख़त्म हो जाती है। तो रेगुलरिटी में जो काम होता जाता है तो समटाइम हमें ऐसा लगता है वी आर एट द एज ऑफ दैट, कि हमें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो हम बीच में ब्रेक लेते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं, हॉलीडे मनाते हैं। ठीक है, तो ये पोएट जो है उसने कैसे निकाल लिया है,
उसने अपने आप को बचाया है उस डेली ग्राइंड से, उस टीडियस वर्क से अपने आप को बचाया है उसने बाय रीडिंग द बुक्स. So students, today we will read only these two stanzas. You will read these two stanzas in next class. We will see, I will explain all these things again and I will ask you questions. Okay students, thank you.